world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5,
exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. He used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. President demanded that the Soviets something much bigger on our missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile October the 16th, reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transmissiles carrying missiles continued on course towards Cuba. President demanded that Soviet forces went on alert to move all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted to prevent UN's Emergency Security Council and unofficial channels. But the Soviets ended the hair-flicker stand instead. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete. And we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to in order to get the Soviets or the Russian missiles out. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete. Sokolov. We were going to get rid of them. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. Anyway, we had no strategic value whatsoever. But in order to get the Soviets or the Russian missiles out, the Turkey deal was a ruse. Sokolov out of the hospital. At the time, we had no agents on the eastern side. We were running out of time, screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No. Missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. So what kind of weapon is Sokolov still something to do with space rocket? No. According to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis.
The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue, Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. No. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. She's equipped with two 6-barrel 20mm 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. No. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you.
If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा ये ऑप्शन है, जो मेन्यू है, ये ओपन हो गया है। तो गेम के स्टार्ट में ही जो है सबसे पहले जो है वो मेन्यू ओपन होता है। और ये जो गेम है ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो गेम है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में खेली है। 2009 के अंदर जो है मैंने इस वीडियो गेम को पहली बार जो है वो खेला था। मुझे याद है तब जो है वो प्ले स्टेशन 2 आता था। और इस गेम की देखिए सबसे जो इस गेम को जो है वो यूनिक बनाता है वो देखिए कि इसमें जो है आपको जो है वो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पर फूड का ऑप्शन आया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो खाना रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कैलोरी मेट है, तो अगर मैं एंटर दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे और उसको ईट दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पर जो है वो एक फील दी गई है कि जो कैरेक्टर है वो इसको खा रहा है सच में। तो यहाँ पर ये जो गेम है मैं ये अपने कीबोर्ड और माउस से खेल रहा हूँ क्योंकि जो मेरा कंट्रोलर है वो ठीक नहीं है। तो थोड़ा मैं यहाँ स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे देखने में जो है वो आसानी हो। तो यहाँ पर जो है और भी सेटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा। जब हम टैब दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बड़ी इसकी जो है वो कीबोर्ड पे खेलना बड़ा मैसी है कि टैब बटन जो है वो स्टार्ट बटन है, और जो SAD और W है उससे आपको जो है वो ऊपर नीचे और दाएं बाएं जा सकते हैं। तो यहाँ W को दबाकर हम ऊपर जाते हैं और S को दबाकर जो है हम नीचे जाते हैं। तो यहाँ जब मैं ऑप्शन में जाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे जो ओन व्यू है, यहाँ पर आप रिवर्स नॉर्मल रख सकते हैं, कैमरा मोड थर्ड पर्सन व्यू है, कैमरा अप डाउन नॉर्मल है। ये तो ये सारी सेटिंग्स आप खुद भी देख सकते हैं कि इनसे क्या होगा, और हम भी इनको एक्सप्लोर करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है वो मैप भी दिया गया है, और मैप जो है हमें जो है वो थोड़ा बहुत गाइड करेगा। ये देखिए ये ई जो है वो एक्शन बटन है, जूम इन ई से हो रहा है। हालांकि यहाँ पर वाई दिखाया गया है, मगर ये प्ले स्टेशन के कंट्रोल है तो वाई यहाँ पर नहीं है बल्कि ई आपको कीबोर्ड पे दबाना पड़ेगा। और एक्स जो है उससे आप जूम आउट कर सकते हैं, और वो मुझे अभी भी नहीं पता कि वो एक्स कहाँ है, किसको ये जो है वो एक्स बटन बोलते हैं। तो मैप पे मैं फिर से जाऊँगा, पहले मैं एक्स बटन देखता हूँ कि कौन सा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है एक्स बटन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा बटन है, क्योंकि ई तो मैं फिगर आउट कर चुका हूँ कि ई जो है वो वाई है, मगर ये एक्स क्या है ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। मगर हम यहाँ पर हिम्मत नहीं हारेंगे, हम देखेंगे कि एक्स क्या है। चलिए फ़िलहाल तो हमें नहीं दिखा कि एक्स क्या है, और जब ज़रूरत पड़ेगा गेम में तो देखते हैं आगे चलकर हमें पता चलता है कि नहीं नहीं दिख गया था। हाँ ये है शायद, हाँ यू है एक्स, आप याद रखना। ई जो है वो वाई है और यू जो है वो एक्स है, UI UX, ठीक है। यहाँ फिर से मैं टैब बटन को दबाकर जो है मैं वापस आया हूँ, और चूँकि मैं गेम के साथ साथ कैमरा को भी कंट्रोल करना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा बहुत जो है डिस्ट्रैक्शन भी मुझे हुई। मैं खुद ही जो है वो लाइव स्ट्रीम को भी हैंडल कर रहा हूँ, तो यहाँ साथ साथ जो है वो लाइव स्ट्रीम को भी देखना पड़ता है कि कैसी चल रही है बार बार। तो फ़िलहाल तो ठीक ही जा रही है, और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि ठीक ही जाएगी। तो यहाँ पर जो है टैब दबाकर मैं वापस आता हूँ और थोड़ा बहुत जो है वो आपको दिखाता हूँ उसका फील। देखिए कितनी बढ़िया जो है वो साउंड है इस गेम की। आप देख सकते हैं कि कदमों की तक की जो आवाज़ है वो कितनी क्लियर है, और आप देख सकते हैं कि कितना जंगल का जो फील आ रहा है। क्योंकि मैंने जो गेम की अगर आप साउंड सेटिंग्स को देखें, अगर मैं ऑप्शंस में जाऊँ तो यहाँ पर मैं साउंड में जाऊँ, ऑडियो में जाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है गेम का वो मैंने डेलिबरेटली जो है वो कम रखा है।
अगर मैं 7 रखता हूँ तो फिर क्या होता है कि जो मेरी आवाज़ है वो गायब भी हो जाती है, जो माइक पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो, फिर क्योंकि इस गेम का ऑडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं 7 रखूँ फ़िलहाल, ताकि आपको जो है वो अच्छा फील आए, गेम के एनवायरनमेंट की आवाज़ें आप सुन सके। तो यहाँ जो है फिर से हम दिखाता हूँ कि कितना, देखिए आप सुन सकते हैं कि पानी की आवाज़ है, परिंदों की आवाज़ है, कितना रियलिस्टिक जो है वो फील आ रहा है। और ये जो कैमरा है इसको थर्ड पर्सन कैमरा कहा गया है। देखिए मैं नीचे जाने वाला था, यहाँ से अगर मैं नीचे जाता तो जो कैरेक्टर है मेरा, ये उधर ही इसका, देखिए कहाँ से मैं जाने वाला था, नीचे देखिए। तो ये भी ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा, कीबोर्ड पे पहले हमें F को होल्ड करना पड़ता है अगर हमें ये व्यू चाहिए, और उसके बाद जो है हम दाएं बाएं जो हमारे बटन्स है, A है, D है, उससे दाएं बाएं कर सकते हैं। और S से जो है वो नीचे देख सकते हो, W से जो है ऊपर, और आपको पहले F को होल्ड करना पड़ता है। और यहाँ पर कुछ बटन जो है, देखिए जो I है, अगर मैं I को दबाता हूँ तो ये कैमरा जो है वो नीचे जाता है। अच्छा, अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो देखिए कैमरा जो है ये, देखिए यहाँ पर मैं जो है K को दबाकर ऊपर मैं गया हूँ पूरा, यानी K और I से जो है देखिए कैमरा जो है वो एडजस्ट हो रहा है। इतना जो है वो ठीक है, और यहाँ से जो है वो दाएं बाएं जो है वो कैमरा हो रहा है। अच्छा, F दबाएंगे तो मैंने को बता दिया। तो यहाँ पर जो है अगर हम O को दबाए तो देखिए ये दूर जा रहा है कैमरा, और मैं चाहता हूँ कि मैं दूर का ही देखूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा एनवायरनमेंट को देखूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, और रास्ता कहाँ से है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी रास्ता है जाने का। और देखिए नीचे कुछ पड़ा हुआ है, और ये कुछ मेड है, यानी कि कुछ मेडिसिन भी इसको जो है वो मिल गए हैं। अगर मैं टैब बटन को दबाऊं और यहाँ पर जो है मैं फूड के ऑप्शन के अंदर जाऊं तो मेडिसिन जो है इस तरह से हमें नहीं दिखता। मैं कुछ और भी बटन आपको दिखा दूँ, जैसे वन अगर मैं कीबोर्ड पे दबाऊं तो देखिए LF मेड जो है वो मिल गया है, और इसको जो है वो A या D से हम जो है राइट या लेफ़्ट जा सकते हैं वन को होल्ड करके। तो वन को मैं होल्ड कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, और ये हमें मिला है लाइफ मेडिसिन, और इस पर लिखा है कि इसको रशिया ने बनाया है, और इससे जो है आपकी लाइफ जो है वो रेस्टोर होगी, और A दबा कर जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विंडो के अंदर। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। अच्छा, अब देखिए 2 को दबाकर जो है यहाँ पर और भी चीज़ें निकल रही है, जैसे राशन आपका निकल रहा है, और आपके पास एक छुरी है। देखिए आप इसमें छुरी जो है वो हाथ में पकड़ी है। अगर आप थोड़ा यहाँ पर जूम करें, देखिए छुरी इसके हाथ में आ गई है। फिर से अगर मैं O दबाऊँ तो फिर से जो कैमरा है वो पीछे जाएगा। तो यहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ से नीचे जाते हैं। देखिए ये जो पेड़ है, जिस पेड़ के ऊपर जो है इस तरह से निशान हो तो उस पेड़ के ऊपर जो है आप चढ़ भी सकते हैं। तो ये तो मुझे पहली बार जब मैंने खेला था तो पता नहीं था, तो जब मैं आगे जाता हूँ इसमें तो देखिए वो हमें रोकेगा। देखिए हमें कॉल आ रही है। Snake, where do you think you're going? You can't expect to proceed with the mission without any weapons or equipment. First, you'll need to recover your backpack. It's caught on a tree to the south. Press the action button to climb the tree and retrieve your backpack. Is that clear? तो देखिए इस गेम की बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि इससे ज़्यादा जो है वो रियलिस्टिक गेम प्ले लगता है, ज़्यादा इमर्सिव गेम जो प्ले है वो बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम आगे गए थे, क्योंकि पहली बार जो भी खेलेगा इसको वो तो आगे ही जाएगा। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि कॉल करके कि जो है आप इस पर चढ़िए, और ये वो हम ई से ई बटन प्रेस करके जो है हम इसके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जो एक्शन बटन है। और देखिए जो हमारा ये बैग है, अगर मैं O दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कि बैग हमारा यहाँ पर लटका हुआ है। तो फिर से एक्शन बटन दबाऊँगा, और देखिए जो बैग है वो हमें मिल चुका है। अब देखिए हम फिर से कॉल खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button.
For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean?
Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let any...
Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. तो यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस कराया गया हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ, जैसा कि हमने देखा कि एक मेजर है जो कि मिशन पे गाइड कर रहा है हमारे मेन कैरेक्टर को, और उसके बाद जो मेंटोर है हमारे कैरेक्टर का, जो कि एक लेडी को दिखाया गया है जिसका नाम बॉस है, और उसने भी अपना जो फ़लसफ़ा है वो जाड़ा है इतने टाइम तक जो ये रेडियो ट्रांसमिशन पे ये चल रहा था ये बातें। तो इसने भी जो है वो डिफ्रेंशिएट किया है बिटवीन फाइटर एंड अ सोल्जर, क्योंकि जो हिडियो कोजिमा की जो वीडियो गेम्स होती है उनके अंदर हर किसी कैरेक्टर को अच्छी तरह दिखाया जाता है, उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उनकी इंडिविजुअल थिंकिंग को दिखाया जाता है, और इसी तरह से हर कोई जो कैरेक्टर है वो अपना एक फ़लसफ़ा रखता है ज़िंदगी का, जैसे कि बॉस ने भी अपना जो फ़लसफ़ा है वो बता दिया। और ये जो हमारा कैरेक्टर है इसका भी इनने जो है वो कोड नेम रखा है, इसलिए इसको जो है वो स्नेक कहा जाएगा इस मिशन पे। और ये भी हमें पता चला बातों से कि ये इसका पहला सर्वाइवल मिशन है। इससे पहले शहरों वगैरह में जो है वो हमारे कैरेक्टर ने जो है वो फ़ाइट्स वगैरह की है, और इसकी जो सेटिंग है वो एक जंगल में है रशिया के, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हथियार इसके पास नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको कोई हथियार नहीं दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है कि जहाँ पर जो है ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करेगा कि अगर रशिया को पता चला कि अमेरिका ने अपना जो ये सोल्जर है वो उनकी ज़मीन पे भेजा है। और जो इसका मकसद है वो तो आपने देखा होगा, जो मैं पिछले बहुत सारे मिनटों से जो कट सीन चल रहा है कि एक साइंसदान है जिसको कि बचाना है, जो कि असल में रशिया का ही साइंटिस्ट है। तो आगे आगे चलकर जो है और भी बातें जो है वो क्लियर होती जाएगी। और मेरा ध्यान, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, तो मैं ज़्यादा जो है वो स्टोरी पे ध्यान नहीं देता। और मैंने भी बहुत टाइम से जो है इस गेम को नहीं खेला है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो भूल भी गई है। आज बड़े टाइम के बाद इसको खेल रहा हूँ, और फिर भी मैं अब जो है वो ज़्यादा सेटिंग्स पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा लाइव स्ट्रीमिंग पे ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह को मैं देख रहा हूँ। तो अब जो है मैं ज़रा जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे जो है आपको भी मज़ा नहीं आएगा और ना ही मुझे मज़ा आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हुई है, वो है कैमोफ्लाज। तो अगर मैं इसको एंटर करूँ तो देखिए कैमोफ्लाज में क्या है कि जैसा देश वैसा बेस, यानी जैसा एनवायरनमेंट होगा तो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है आप अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, जिससे जो है हमारा जो कैरेक्टर है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ मिल जाएगा, यानी उसको देखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा दुश्मन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटर दिया गया है कि अगर मैं कोई पेंट ना रखूँ चेहरे पे तो ये कह रहा है कि 0 0 आपका जो कैमोफ्लाज है वो बढ़ेगा। तो +5 यहाँ पर दिखा रहा है वुडलैंड के लिए। तो देखिए वुडलैंड यहाँ पर जो है इसने ग्रीन कर दिया अपने चेहरे को भी, क्योंकि ये हरा भरा जंगल है। तो यहाँ पर जो है इसका जो कैमोफ्लाज, इसको देखना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब दुश्मन के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं टैब को दबाऊँ तो फिर से अगर मैं कैमोफ्लाज के अंदर जाऊँ और मैं यूनिफॉर्म को भी चेंज करने की यहाँ पर कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं लीफ का सबसे मैक्सिमम ये कैमोफ्लाज दिखा रहा है, तो यहाँ पर लीफ को मैं लगाऊंगा ताकि मैं दुश्मन को ना दिखूँ। तो देखिए यहाँ पर 50% जो है वो दिखा रहा है कि हम नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो मीटर है ये चेंज हो जाएगा जितना तेज़ आप चलेंगे, या जिस हिसाब से आपका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एक स्वाम्प लैंड, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर दलदल वगैरह है। तो अगर मैं यहाँ पर कैमरा इसका थोड़ा दूर ले जाऊँ, क्योंकि मैं दूर कैमरा कोई पसंद करता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ आसपास के माहौल को, कहीं कोई दुश्मन तो आसपास नहीं है। फ़िलहाल तो कोई नहीं है। अगर मैं स्पेस बार यहाँ पर दबाऊँ तो मैं लेट के भी जा सकता हूँ अगर मुझे ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी है। और आप देख सकते हैं कि हम जो झाड़ियों में भी इसमें चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से स्पेस बार को दबाऊँ तो ये खड़ा हो जाएगा, 2 बार दबाने से खड़ा होता है। और देखिए यहाँ पर जो कुछ दरिया जैसा हमें दिख रहा है आगे, और यहाँ कुछ मगरमच्छ भी है। तो यहाँ पर अब इन हथियारों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 को दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हथियार भी अब
हमारे पास है, क्योंकि हमें बैकपैक जो मिला है, जो हमने पेड़ से उतारा था, उसके अंदर ये चीज़ें हैं। जैसे इजी गन है, ये ट्रैंक्विलाइजर गन है। और इसी तरह से हमारे पास एक माइक्रोफोन है जो कि छोटी छोटी आवाज़ों को पकड़ता है। इसी तरह से अब देखिए कि इनने जो है वो एक ट्रैंक्विलाइजर गन भी रखा है इसके अंदर। इसी तरह से जो है वो नाइफ़ है। तो मैं यहाँ पर इजी गन को इस्तेमाल करूँगा। तो ये देखिए इजी गन से क्या हो रहा है कि अगर मैं फिर से 2 को दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि आपका जो कैमो इंडेक्स है वो ज़्यादा गिरेगा नहीं, और ना ही आपका स्टेमिना ज़्यादा गिरेगा। क्योंकि कैमो इंडेक्स का ये मतलब है कि अगर आप इजी गन को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मुश्किल है दुश्मन के लिए आपको डिटेक्ट करना। तो F दबाकर जो है मैं फिर से यहाँ पर अब देखता हूँ अपने आगे के एनवायरनमेंट को। देखिए मैं क्रोकोडाइल को यहाँ पर जो है वो बेहोश करता हूँ ट्रैंक्विलाइजर गन से, क्योंकि ये क्रोकोडाइल जो है इसमें मार देते हैं। ठीक है, और देखिए आप आवाज़ पे आप ध्यान दीजिए गेम की, कितनी बढ़िया जो है वो एनवायरनमेंट की आवाज़ में दिखाई है। अब देखिए अगर इस दलदल में मैं ओ हो गलती हो गई भाई, वापस जाना पड़ेगा क्योंकि ओ हो जल्दी जल्दी जल्दी। और अब देखिए टाइम लगा, और यहीं पर जो कैरेक्टर है वो मेरा दलदल के अंदर जो है वो मर गया। बहुत ही बुरा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर एक बार अगर आप दलदल के अंदर गए तो फिर आपको जल्दी से निकलना पड़ेगा। और यहाँ क्या हुआ कि मुझे 2 ही यहाँ पर क्रोकोडाइल दिखे। क्रोकोडाइल का जो होता है वो नेचुरल कैमोफ्लेज होता है। अगर आप क्रोकोडाइल को सच में रियल लाइफ में भी देखेंगे तो बहुत मुश्किल होता है क्रोकोडाइल को डिटेक्ट करना, क्योंकि मैंने रियलिटी में भी क्रोकोडाइल को देखा है। ये ब्लेंड होता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो देखिए ये भी ट्रैंक्विलाइजर गन है, मगर मैं फिर भी जो है इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि मैं इस वाले इजी गन को इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर एक को मैंने गिरा दिया है, दूसरा ये रहा, इसको भी हम कर देते बेहोश। तीसरा जो है वो ये रहा। F दबाते हैं और देखते हैं कि देखिए चौथा इसकी वजह से मैं गया था स्वाम्प में, दलदल में फंस गया था। तो इसको भी पहले ही कर देते बेहोश, और जल्दी जल्दी जाते, इस टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, और जल्दी से हम जो है वो पहुंचने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस टाइम हम बच गए। हाँ देखिए क्रोकोडाइल किस तरह से हमला करता है इसमें। अगर आप क्रोकोडाइल जा गया तो ये देखिए मुझे कुछ हथियार यहाँ पर मिले हैं, और जल्दी से मैं यहाँ आता हूँ और थोड़ा हम आसपास के माहौल को देखते हैं कि और कोई रास्ता तो नहीं था। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस भी हमें मिले हैं। जैसे हमें बाइनोक्यूलर भी मिला है, और मैं बाइनोक्यूलर को यहाँ पर इस्तेमाल करूँ तो मैं देख सकता हूँ दूर दूर की चीज़ें भी मैं देख सकता हूँ। देखिए यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है। तो 1 दबा कर जो है मैं और भी जो है सोनार, देखिए सोनार क्या है, ये एनिमल्स को डिटेक्ट करता है, साउंड वेव्स को। और इसी तरह से मोशन डिटेक्टर भी है मेरे पास, कि जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिटेक्ट करता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से AP सेंसर है, जब ये ज़िंदा चीज़ों को देखता है तो ये वाइब्रेट करता है। अच्छा, रिवाइवल पिल है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही, मैं भूल ही गया था आपको बोलना, कि जो फेक डेथ पिल है वो हमारे पास 10 है। तो अगर हमें कोई दुश्मन जो है वो देखेगा तो हम जो है वो ड्रामा कर सकते हैं कि हम जो है हम मर चुके हैं, अगर हम फेक डेथ पिल को इस्तेमाल करें। और उसके बाद क्या होगा कि हमें रिवाइवल पिल जल्दी खानी पड़ेगी। तो चलिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, फेक डेथ पिल को मैं एक बार इस्तेमाल करता हूँ। अब मुझे पता नहीं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। एक्शन बटन से भी नहीं हो रहा है। फेक डेथ पिल को एक बार खाते हैं। देखिए कोई चीज़ हिल रही है यहाँ घास में। देखिए आप आसपास की चीज़ों को आप खा भी सकते हैं इस गेम में। जैसे एक यहाँ पर कुछ पेड़ पे था जो मुझे दिखा था अभी। देखिए ये नीचे गिर गया, और इसको मैं खा सकता हूँ।
कि सी फ्रूट। अब देखिए अगर मैं टैब दबाऊँ और फूड में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि गुलोवा इसका नाम है। जब मैं इसको खाऊँ, ईट करूँ तो बहुत ही अच्छा इसका मज़ा है। और इसमें ये भी है कि कैरेक्टर बताता है कि कौन किस चीज़ का कैसा मज़ा है। तो इसी तरह से आसपास के जानवरों को भी आप खा सकते हैं अगर आपका स्टेमिना जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो बार है जो ऊपर आप देख रहे हैं स्नेक जहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें ब्लड है और स्टेमिना है। तो स्टेमिना भी इसमें कम नहीं होना चाहिए। अब मसला है फेक डेथ पेल का कि इसको किस तरह से खाना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप डब्ल्यू को दबाइए, और डब्ल्यू को दबा के जो है वो नहीं हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फेक डेथ पेल को मैं कैसे कंज्यूम करूँ। हाँ, मैंने खा दिया इसको। देखिए ये मर गया। अब मुझे जल्दी से जो है वो क्या करना पड़ेगा कि देखिए ज़िंदा होने ये रिवाइव, फिर मैंने खाई, देखिए मैं फिर से ज़िंदा हो गया। तो एच है जो दबाते कीबोर्ड पे, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से रिवाइव हो गया। तो ये आपने किसी भी गेम में आज तक नहीं देखा होगा कि आप जो है वो फेक डेथ पिल खाते हैं और उसके बाद जो है आप रिवाइवल पिल खाकर जो है वो ज़िंदा होते हैं। तो ये बहुत ही अनोखा एक फ़ीचर था इस गेम का। 2004 की ये गेम है। Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The तो camo ये वही index बात है जो shows मैंने how आपको well ऑलरेडी your current बोल रखी है। camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर अगर मैं F को दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कि पहली बार जो है वो एनकाउंटर हुआ है हमारा एनिमी के साथ। अगर मैं बाइनोक्यूलर्स को इस्तेमाल करूँ तो देखिए यहाँ पर एक एनिमी सोल्जर है जो हमारी तरफ आ रहा है। तो ये कह रहा है कि आपको जो है वो इनको एंगेज नहीं करना है। बेहतर यही है कि आप जो है इनको एंगेज ना करें अपने साथ बैटल में। तो ये भी एक इस गेम का एक बहुत ही यूनिक फ़ीचर है कि उस ज़माने में क्या होता था 2004 में या 2000 में कि ऐसी गेमें बनती थी ज़्यादातर कि जिनमें आपको जो है वो एंगेज करते थे एनिमी को, कि दुश्मन जो है अचानक से आपको देख लेता था, जैसे उसके पास कोई मतलब कोई सुपर पावर था आप देखने का। तो इसमें बड़ा लॉजिकल ये गेम है कि इसमें दुश्मन आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको तभी दिखेगा जब आप ओपनली जाएंगे माहौल में और बहुत सारा शोर करेंगे, तभी आपको जो है वो डिटेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90% इस टाइम मेरा कैमो इंडेक्स है। मैं 90% जो है वो इनविजिबल हूँ, नहीं मेरा 90% चांस है कि मैं नहीं दिखूँगा दुश्मन को। और देखिए मुझे क्या करना है कि मुझे निकलना है चुप करके बगैर इनको नोटिस कराए हुए। अच्छा, आवाज़ भी यहाँ पर कम आपको करनी है ताकि आवाज़ कम हो और ये डिटेक्ट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कुछ और चीज़ भी मुझे मिली है, खाने की ही चीज़ मिली है। तो मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँगा।
देखिए ये दुश्मन है। देखिए मैंने खुद ही गलती की। Please respond. This is HQ. Patrol here. We're being attacked. Enemy position unknown. देखो Going मैं into खुद high ही alert. गलती की कि मुझे वो दिखा ही नहीं सोल्जर और मैंने जो है वो अटैक कर दिया। मुझे ढूंढना है इसके लिए। अगर 100 सेकंड तक मैं चोरी रह पाया तो ये खुद ब खुद जो है ये मीटर मतलब ये जो अटेंशन है इनका, ये जो हाई अलर्ट पे गए हैं, ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ 90 सेकंड्स तक मुझे जो है वो चुप करके रहना है ताकि मुझे ना देख सके। असल में ग्रीन सारा है तो मुझे दिखा ही नहीं कि ये सोल्जर को मैं मार रहा हूँ कि किसको मार रहा हूँ। और यहाँ पर अच्छी बात क्या हुई कि मैंने जो है वो इस गन को इस्तेमाल किया जो कि ज़्यादा देखिए मैं पकड़ा गया शायद। क्या मैं इनको मारूंगा। जल्दी से उठना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है। ये बेहोश हो रहे हैं। देखिए कॉशन यहाँ पर ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने सारे दुश्मनों को ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो गिराया है। तो बड़ी गड़बड़ हो गई कि पहले ही दुश्मन जो है वो अलर्ट हो गए कि जहाँ मुझे जाना है। तो इस तरह से तो बिल्कुल इस गेम को नहीं खेलना है जिस तरह से मैंने खेला।
Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही ख़तरनाक सिक्योरिटी है, ये बड़ा संभल के जाना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ बचेंगे भी नहीं और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। और मैं आगे नहीं देखता तो मैं बड़ी बुरी तरह से फंस जाता। कैमो इंडेक्स मेरा बड़ा ज़बरदस्त है 80%, इसलिए मुझे ये देख नहीं पा रहे हैं कि मैं 80% लगभग इनविजिबल हूँ अपने यूनिफॉर्म की वजह से। देखिए पैरों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, जो दुश्मन है उनसे भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन कहाँ है। एल दबा कर यहाँ से देख सकते हैं राइट साइड से, और जे दबा कर आप लेफ़्ट साइड से देख सकते हैं स्क्रीन पे होल्ड करके। तो मुझे लगता है कि मैं बिल्डिंग के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ से रास्ता होगा इसका।
ई दबा रहा हूँ मैं, मगर नहीं जा रहा है यहाँ से, तो ऐसे जाना पड़ेगा, वरना पकड़े जाएंगे। दरवाजे की खोलने की आवाज़ आ रही है। आगे कबाब कोई नहीं है। ये दबा कर देखते हैं, यहाँ भी कोई नहीं है। भाग जाते हैं पहले ही। ये यहाँ से कोई दरवाज़ा है, ये सही है, यहाँ है। Who are you? You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process. Or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor.
Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Freeze! So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you?
operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Huh? Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov, too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. कोई हथियार देखते हमें मिलता है इनका कि नहीं मिलता है क्योंकि ये सारे यहाँ पर गिरे पड़े हैं और वापस जाना पड़ेगा जहाँ से हम आए Dolly don't word no. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes.
the best Gru has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look, Okay? those men were... That's what they were making you build. Yes, the Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying?
Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move?
You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा कैरेक्टर है उसकी कितनी ख़राब हालत हो गई है, और इस गेम की सबसे खास बात ये भी है कि इसके ऊपर जो है आप इलाज भी अपना खुद ही कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर था इस गेम का उस टाइम पे। तो देखिए ये यहाँ पर ऊपर नीचे अगर हम जाएंगे तो देखिए एक कहाँ का इंजरी दिखा रहा है। सबसे पहले ये दिखा रहा है कि यहाँ पर सीने के पास दिखा रहा है कि डीप कट हो गया है, ब्लीडिंग, नो बैंडेज अप्लाइड। तो इसमें दो चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी। एक तो जो है वो ये कह रहा है कि आप जो इसके मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। तो 1 के जाकर मैं मैड को इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करते हैं इस्तेमाल, यहाँ वो बटन देखना पड़ेगा। अच्छा, एच दबाना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो डिसइंफेक्टेंट, एंटीडोट, सेरम, डी मेड, सी मेड। नहीं, ये मैंने गलत दवाई ली है, कोल्ड के लिए है। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, इसका नो बैंडेज अप्लाइड। अच्छा, इसमें बैंडेज लगाना पड़ेगा, जो कि 2 बटन दबाकर यहाँ पर। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट भी यहाँ पर है, जो कि हम एच दबाएंगे, और यहाँ पर बैंडेज भी यहाँ पर है। तो चलिए ये हो गया। सफरिंग फ्रॉम ए डीप कट ब्लीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करें इसका, तो यहाँ पर सिच्योर लगाना पड़ेगा, यानी कि सिलना पड़ेगा इसको। तो देखिए ये हो गया। अब क्या करें, यूजफुल फॉर रिमूविंग बुलेट्स एंड एरोज, ये भी करते हैं। बर्न ट्रीटमेंट, डीप कट के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्प्लिंट, क्योंकि ये हड्डियों को भी ठीक करता है। और यार यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। सिप्टिक देखते हैं, सिप्टिक क्या करता है। ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन है बोन फ्रैक्चर्ड, तो बैंडेज लगाना पड़ेगा। तो बैंडेज भी यहाँ पर कहाँ है, बैंडेज ये है, लीजिए हो गया। बोन फ्रैक्चर्ड, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, फ्रैक्चर के लिए लगाना पड़ेगा स्प्लिंट। बोन फ्रैक्चर्ड स्प्लिंट एक और। अच्छा, स्प्लिंट नहीं, बोन फ्रैक्चर्ड अफेक्टेड एरिया फास्ट स्प्लिंट, नो बैंडेज अप्लाइड। अच्छा, बैंडेज लगाना पड़ेगा। तो हमें डीप कट ब्लीडिंग, नो बैंडेज अप्लाइड, बैंडेज और डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर से सिप्टिक शायद, मैं कट। सबसे हमें डीप कट, ब्लीडिंग हो रही है आर्म में, डीप कट के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पहले ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद
डिसइंफेक्टेंट लगाना पड़ेगा और बैंडेज लगाना पड़ेगा। तो सफरिंग फ्रॉम ए डीप कट ब्लीडिंग, ठीक है, तो ब्लीडिंग के लिए हम लगाते हैं सेप्टिक। तो यहाँ पर भी वही है कि आपको पहले बैंडेज लगाना पड़ेगा, स्प्लिंट लगाना पड़ेगा और स्पेक्टक लगाना पड़ेगा और डिसइंफेक्टेंट लगाना पड़ेगा। और डीप कट के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इस्तेमाल, हम करेंगे इस्तेमाल स्विच और किट। और देखिए हमारा कैरेक्टर है वो ठीक हो गया है। तो देखिए गेम का कितना बढ़िया फीचर था कि खुद आपको जो है इलाज करना पड़ता था। इतनी ज़बरदस्त स्टोरी आपने खुद भी देखा कि कितना स्टोरी इसका ज़बरदस्त है और किस तरह से होल्ड करके रखते हैं अपने व्यूअर को इस गेम के अंदर। हो गया ट्रीटमेंट। Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? यहाँ पर बलून से नहीं निकाला जाएगा। Shagohod. ये शैगोहॉड है जो कि वेपन एम्प्लीफाइड इस्तेमाल करते हैं कि बॉस है हमने नहीं किया था पानी में फेंका। तो ये कैरेक्टर जो है अभी इसका समझ नहीं आ रहा है कि Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk.
Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! यहाँ पर सोकोलॉव की जो फैसिलिटी है जो रशिया में हिट कर दी गई है और यहाँ पर जो सारा एग्ज़ाम आएगा वो बॉस के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर डाटा सेव का ऑप्शन आ गया है, यस। और मैं जो है वो डाटा को सेव करूँगा और यहाँ मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा ताकि हमारा जो डाटा है वो सेव रहे। क्रिएट ए न्यू फाइल। और देखिए हमारा जो 14 अगस्त 2025 का डाटा है सेव हो गया है 1 घंटे 38 मिनट का। तो यहाँ पर अभी जो गेम है वो यहीं से रिज्यूम होगी और यहाँ पर जो है वो अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो गई इस गेम की। गाना चलेगा तो डेस्कटॉप ऑडियो को मैं यहाँ म्यूट कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पर ना आए। डेस्कटॉप ऑडियो को यहाँ बंद ही कर दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसके इंट्रो को जो है वो मिस करें। तो इसके बाद जो है मैं इसको बंद करूँगा और इंशाल्लाह और आज पॉसिबल हुआ तो मैं कंटिन्यू रखूँगा इसको खेलना, और नहीं हुआ तो किसी और दिन आकर जो है इसका पार्ट 2 हम इसको कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को। तो ये एक मास्टरपीस गेम है और बहुत बड़ी हिट है अपने ज़माने की। तो ये मास्टरपीस क्रिएट किया है कोनामी ने और आज से 11 और 5 और 16 साल पहले मैंने ये गेम खेली थी प्लेस्टेशन 2 पर, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो खुद देखिए कि क्या मास्टरपीस क्रिएट किया था कोनामी ने। रिमास्टर के अंदर जो है वो ग्राफिक्स और साउंड को इम्प्रूव किया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो पीछे यहाँ पर गाना चल रहा है जिसको मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का मसला हो जाएगा। तो फिर मैं सोचा कि मैं आपको ये दिखाऊं ये सीन कि कितना बढ़िया इन्होंने जो है इसका वो स्टार्टिंग बनाई है। तो इंशाल्लाह अगर आज मैंने कंटिन्यू रखा तो रखा, अगर नहीं रखा तो किसी और दिन आकर जो है इसका पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये कहानी अब जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपने खुद भी देखा कि कितनी इंटरेस्टिंग जो है इसकी स्टोरी है और गेम प्ले भी इसका कितना बढ़िया है, कितना जो है वो इमर्सिव है और कितना ये जो है वो इन्वॉल्व कराता है अपने यूज़र्स को। तो यहाँ पर जो है अब मैं इसको बंद कर देता हूँ
मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है और नमाज का भी जो है वो टाइम है। इस टाइम इशा का टाइम है। तो चलिए इजाज़त लेते हैं।